Assalamu alaikum class 6 students. Today we are going to do exercise of chapter number 1 and then we will start chapter number 2. So let's begin. Our first question is write proper term or word against each statement. मतलब कि ये जो इसने definition या जो introduction दिया हुआ है जिस चीज़ का हमने उसका name लिखना है. तो है first a group of different tissues which work together. Group of tissues क्या होता है? Organ होता है. The brain of the cell which controls its function. हमने previous lecture में पढ़ा था कि brain of the cell क्या होता है? वो होता है nucleus जो सारी उसकी activities control करता है. Next third है an organism consists of several cell. अब अगर एक ऑर्गेनिज्म में एक सेल होगा तो हम उसे कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर एक से ज़्यादा होंगे, काफ़ी सारे होंगे, तो हम उसे कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इसका आंसर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है? वो होता है टिश्यू. तो यहाँ आएगा टिश्यू. फिफ्थ इज़ आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल. अब आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल क्या होती है? वो होती है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, और ये हार्ड मटेरियल की बनी होती है. 6 इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू सी थिंग्स विच आर नॉट सीन विद नेक्ड आइज़. अब हमने इस चैप्टर में एक ही चीज़ ऐसी पढ़ी है जो वो हमें दिखा सकती है जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, और वो इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर. अब जो अप्रोप्रिएट आंसर है, जो बेस्ट आंसर है, जो क्लोज्ड आंसर है, वो हमने जो है वो मार्क करना है. फर्स्ट इज़ एनिमल सेल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है वो ट्रैप कर पाता है लाइट, और लाइट से फिर वो जो है प्रोसेस करके फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है. नेक्स्ट इज़ the powerhouses of the cells are mitochondria. Mitochondria are the powerhouses और energy makers of the cell. क्योंकि हमने अपने previous lecture में हमने देखा था और हमारी book में भी है कि जो mitochondria होते हैं वो energy produce करते हैं. Third is Amir was looking at a cell through a microscope and saw mitochondria and cell membrane. What could Amir say about this cell? अब उसने हमसे पूछा है कि इस सेल का हम जो बताएं कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है. नंबर पार्ट ए इज़ इट कैन ओनली बी अ प्लांट सेल. नो, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल. दैट्स व्हाई सी इज़ द करेक्ट आंसर. इट इज़ आइदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल. ये प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है. फोर्थ इज़ हार्ट, लिवर एंड ईयर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल ऑर्गन्स. ये हमारे ऑर्गन्स हैं. फिफ्थ है प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स एंड इट इज़ स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स बिकॉज दे हैव जाइलम टिश्यू. जाइलम का इसमें कोई पार्ट ही नहीं है, क्योंकि जाइलम जो है वो फूड प्रोड्यूस नहीं करता और ना ही फूड कंडक्ट करता है, ये वाटर कंडक्ट करता है. बी इज़ दे हैव रूट्स. नो, रूट्स ओनली एब्जॉर्ब एंड सपोर्ट द प्लांट. They have stems. Yes, this is the correct answer because phloem tissue is only present in its leaves and it produces food while the food is transported by stem. Next our question is answer the following questions in detail. मतलब कि हमने long questions लिखने हैं. First is describe the parts and functioning of a light microscope. Here when you will open page number 5 you will see a heading microscope. From top to the bottom it is considered into a long question. Here you will write all these paragraphs and you will also draw the diagram of this diagram of light microscope. Now I have marked these headings for these paragraphs. I will read these for you. First heading is definition. Then you will write its definition and simple introduction. Then second heading is parts of microscope. Then you will write its all parts. Then the third heading is function and its uses. Fourth heading is characteristics. It is for fifth paragraph, and in additional then you can write the definition of a slide, and you must draw this diagram because it is a long question. Next our question is describe the structure of a plant cell. Also draw its labeled diagram.
Here when you will open page number 6, then you will see a heading plant cell. Then write, there are many parts in a cell. A microscopic study of cells shows different parts in animal cells. Then you will draw this diagram of only plant cell and you will label it properly. Don't miss any point. These may deduct your marks. And then you will write these headings. Number 1 is cell wall, and you can skip these questions which are present in these. Number 2 is cell membrane. Then you will write cytoplasm. Then all these cell organelles. Skip this centriole because it is not present in plant cell. We have to write only structure of plant cell, and centrioles are not present in plant cells. Then you will write nucleus. Nucleus is the most important part, and you can write it on the top. And here you will write till the most important part of a cell is its nucleus. It controls all the activities of cell. Therefore, a nucleus is the control center of the cell. Till here you will write and draw this diagram. You must draw all these diagrams because it is very important and it is a long question. Write a note on the nucleus of a cell. When you will open page number 7, you will see a heading nucleus. You will write it whole and draw this diagram. You must do it properly. Skip questions which are present in the paragraphs because they are not necessary. Next, our question is write about shoot system of a plant. Here students, when you will open page number 11, then you will see a heading shoot system, and then you will write it, and then you will draw this diagram only of shoot system. This topic is continuing on page number 12 also. Only these 2 lines are present on this page number 12. You have to write these also. Next is define a cell, a tissue, an organ system, and an organism. These definitions are on different pages. We will mark them. Here students, on page number 4, we mark the definition of a cell. A cell is a basic unit of structure and function of all living organisms. Next, on page number 9 is the definition of a tissue. A group of cells performing same function is called a tissue. Next, on page number 11 is the definition of an organ system. An organ system is a group of organs which work together. Different organ systems do one or more than one special functions. And then on page number 13 is the definition of an organism. An organism is a combination of different organs and organ systems which work in coordination. Next, our question is extend your thinking. A brain cell contains thousands of mitochondria. What can you conclude from this information about the brain's need for energy? क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे सब ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और सारे मैसेजेस को जो है वो रिसीव करता है और सारे एक्शंस लेता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे ब्रेन को ही चाहिए होती है. So we conclude that our brain needs the maximum amount of energy produced by our mitochondria. Next is second part, which cell part is being described. हमें ये बताना है कि कौन सा जो पार्ट है उसकी जो है वो डेफिनेशन बताई जा रही है. Helps keep cytoplasm inside, वो है cell membrane. Controls all cell activities, brain of cell क्या है? Nucleus. Liquid filled space for storage, वो है vacuole. Next is green parts which trap energy, जो कि सिर्फ plant cells में होते हैं, वो है chloroplast. Next is clear jelly like material, वो है cytoplasm. Next, our question is, suppose you saw a small organism move across your book. Would you conclude that this organism was multicellular or unicellular? As we know, cells are very, very small to be seen with naked eyes. That's why if we see that organism, it means that it is not a unicellular organism, it is a multicellular organism. How is a tissue like a team? A tissue is like a team because many cells make a group to work, and a group is called a team because every organism helps other organism or every cell helps other cell. Last but not the least question is complete the Venn diagram. अब यहाँ पे उन्होंने हमें 2 सर्कल्स दिए हैं जो दो एक साइड से मर्ज हो रहे हैं. जहाँ ये मर्ज हो रहे हैं हमने वहाँ लिखने हैं वो ऑर्गेनेल्स जो
एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में सेम होते हैं। अब एक को हमने लेबल कर लिया है एनिमल सेल, दूसरे को हमने लेबल कर लिया है प्लांट सेल। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन होती है? इन दोनों में न्यूक्लियस होता है, तो वो हम ग्रीन पार्ट में लिख लेंगे। और इन दोनों में चीज़ कौन सी कॉमन होती है? वो होती है सेल मेम्ब्रेन, वो हम लिख लेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन्होंने 2 की जगह दी है तो हम 2 ही लिख देते हैं। कौन कौन सी चीज़ अब इनमें डिफरेंट होती है वो हम इन दोनों के अपने अपने सर्कल में लिखेंगे। इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल, और एनिमल सेल में होते हैं छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा, जबकि प्लांट सेल में होता है एक लार्ज वैक्यूल सिंगल। नेक्स्ट इज साइंस प्रोजेक्ट. It is not that important because it's a lab work, but there is a yellow box really very important because it is the definition and introduction of electron microscope. We will read it. An electron microscope is very high powered microscope that uses electrons instead of light. जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में लाइट यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है. It can show an image more than 500,000 times bigger. Many things that cannot be seen with a light microscope can be seen with an electron microscope. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आँख से नहीं देखी जा सकती हैं, वो लाइट माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखी जा सकती, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं. The electron microscope produces a picture similar to the way a television does. जैसे कि मैंने आपको अपने एक previous lecture में बताया था. The cost of an electron microscope is in lakhs. Next उन्होंने questions दिए हुए हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. नीचे उन्होंने कंप्यूटर लिंक्स दिए हुए हैं, आप इन्हें ओपन करके तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं. Alhamdulillah, I have tried to clear all the topics and all the questions. If not, then you can ask me in comments, and keep supporting. Stay tuned, stay home, stay safe, and Allah Hafiz. And must check my description box. I will meet you in my next video.